तन्मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। लास्ट टाइम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. So today is our second last class for this year. Next class will be the last class for this year, and we will have an amazing Srila Prabhupada's disciple coming to do kirtan. It will be a kirtan evening. So we will do kirtan, and you will see a different level of kirtan. You've heard him, yeah? Prabha Prabhu. So my wife, she is not a big fan of any loud music, but when Prabha Prabhu plays Mridanga, she goes, this is the only loud music she can hear. She loves it. She loves it. It is incredible. Please don't miss the opportunity next week for this amazing kirtan. Prabha Prabhu is coming. So, and after that, we will have 2 weeks of holidays. That means holidays not from bhakti, holidays only from your office and only from, preparing prasadam for this and things like that. But aapki jo Krishna consciousness hai, usko, it should never go on holidays. Secondly, on New Year's, on the 26th, there is a big massive festival happening in the temple. So please come, please bring your families there, friends and families on the 26th, Boxing Day. Whoever has not booked a Boxing Day ticket for cricket match,
please come because it will be an amazing day. Kirtan, बहुत time kirtan चलेगा. It will be a festivities over there, है ना. और 31st को भी there is a kirtan. I'm thinking हमारे में से भी अगर कुछ कोई करवा सके kirtan, it will be nice. If you guys want to have a kirtan night on 31st and welcome the new year with the chanting of the holy names, you can do that. And yeah, that's about it. I think. Am I missing anything? I can't remember. So now let's watch a video that will help us understand a bit of gratitude. I'm not too sure इसमें volume आएगा कि नहीं आएगा. Let me put my volume full here. It is muted, Prabhuji, अभी remote से. Oh. How many of you clean? Okay. How many of you clean pots at home? Okay, thank you. Oh, many men are raising their hands as well. Thank you, thank you. It's lovely to see men are also helping at home cleaning pots. You know when you have a sink and you have one pot in the sink and you're trying to clean it, there's not much sound. But when you have more than one pot, 2 pots, if there's 3, God. The more the number of pots, the greater the sound. So it's amazing. We need relationships to be happy, but every guy is like a pot. And if there's 2 pots living in a house, raise your hands if you have ever experienced some sound in the house because of conflicting pots. Please. Thank you. Thank you very much. Raise your hands if this, to add to the 2 pots, there's 2 more pots called kids. And then if 2 more of those pots to grow up as teenagers, then the sound increases even more. Raise your hands if you have experience of that. Phew. Oh my God. What do you do? It's relationships that bring you joy, and the same relationships that you're constantly fighting. One husband and wife, my God, they had such a fight. They had such a fight. And the lady called her mother, Mom, I can't stay with this guy, Mom. He's too much. I'm not going to stay with this guy. Mama, I'm coming back home for 3 weeks, Mama. I'm coming back. The mother said, darling, you don't come back. He must get the reaction to what he has done. I'll come to your home for 3 months. You relax there. You just take it easy. I'll come to your home for 3 months. We will make sure he gets every bit of it. As much as we want our relationships to be deep, we also know the challenges he goes. As much as we want to make them the bondings of love, we know the challenges is massive differences of nature. As much as we want to have those true, genuine exchanges based on affection, the challenges are different opinions. How many of you are married? Oh, it's good. How many of you got a partner of your choice? Thank you. How many of you did not get a partner of your choice? You don't have to raise your hands if you don't want to, it's okay. Did not get a partner of your choice. As if it makes a lot of difference. As if it would make a lot of difference that you get a partner of your choice. If you don't get a partner of your choice, eventually you end up staying with each other and more or less the same things happen. I always say this. I say, no one teaches a volcano how to erupt. No one teaches a tsunami how to swim. No one teaches a hurricane how to attack. And no one teaches a man or a woman how to find a partner in marriage. Natural disasters just happen. Natural disasters just happen. Now, I just have one thing to say. We don't want our relationship to be a disaster. We don't want our relationship to be a disaster. And it's not just a married relationship, any relationship. These principles are true for any relationship. We don't want our marriage to be, or our relationship to be a disaster.
happiness is not about getting what you like. Happiness has a lot to do with liking what you get. We are so busy trying to get what we like. We are so busy trying to get what we like that we forget to like what we get. And there's so much to like in people. So much to like in people. They say the person whom you wanted to get married to, whom you loved, you never get. And the person, now you're married to someone, and the person whom you really loved and wanted in your life simply remains the password of your email ID. You know, just look at it and say, once upon a time, there was a time when we used to love this person. Now I'm stuck with this. Oh my. Believe me, there is a great need that we start liking the person whom we connect to. So, who's got the mic? Let's talk about what we heard and what is the theme. Anybody? What was the theme of it? Kids, did you understand? Yeah. So basically we spend more time on what we don't have than what we have, so we don't appreciate what we have. Very nice. Beautiful. Anyone else? Please share, because this sharing is the key to this learning. क्योंकि मैंने जब इसको देखा, I would have learned something else than were some of you. So please share, क्योंकि sharing से you will have more depth in your realization and other people will learn. Anybody else wants to share? What happened when you listened to this? क्या दिमाग में, दिल में क्या आया? Please share. Yes. People keep on clanging and they keep on banging like pots in a relationship, and they think it's bad, but they're not following it right, and they think they should get that from them and they should get that from them when they're supposed to do the work together. Oh my goodness. Where do you get these realizations? Yes. Thank you, Beta. Thank you. Anyone else? Adults, I want a couple of you to share because it's important. Please share. Yes. In the end, he was talking about the password and the email. So I was thinking, if that person as well comes, then the same thing happens. The bots. That's and exactly the right. Exactly right. It doesn't make a difference. You know, it doesn't make a difference. The thing is, relationship doesn't mean like husband and wife only. It's a relationship between a father and a son. Relationship between us as Bhakti Raksha people. You know, we are a big spiritual family. We all have different thinking. We all have different ways of looking at things. And this is what we need to celebrate. Srila Prabhupada celebrated diversity in a fact that he never cared about कौन सी country से है, कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है, क्या past रहा है, doesn't really matter, didn't really matter. So, it is important for us to be grateful for the relationship we have. And जब मैं अभी I'm looking at all of you, this is such an amazing spiritual family that we have. And just to say thank you to Krishna for giving us such wonderful association, at least 1 week one day in a week. It's very exceptional. And agar hum log, if we have gratitude for what we have, then the thing that we have gratitude for increases in our life. You know? I'm going to share something. Corporate world mein, we did a training. So we paid a lot of money for this guy to come from America to give us this training. Usme kya tha? हम लोगों को सारे leaders को खड़ा कर दिया, and they said, write down, बिल्कुल confidential है, write down 2 names of your staff member, 1 name of your staff member who is the worst, like 4th class staff member. That means if you have a chance, you will probably fire them straight away, you know. और एक person का नाम लिखना था, the person that you will never fire and you want more of that person. ठीक है? तो सब लोगों ने एक 2 नाम लिख लिया. तो कैसे लिखा कि जो first नाम लिखा उसमें लिखा A.
दैट मीन्स ही इज ए ग्रेड एम्प्लॉय, और जो दूसरा लिखा था उसमें लिखा डी ग्रेड एम्प्लॉय। फिर उन्होंने बोला नाउ आई वांट यू टू स्पीक अ सेंटेंस अबाउट द डी ग्रेड पर्सन, आई वांट यू टू स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज ए ग्रेड पर्सन, हाउ वुड यू ट्रीट इट? तो उन्होंने बोला कि यू नीड टू टेल मी व्हाट क्वालिटी दिस डी ग्रेड पर्सन हैज, गुड क्वालिटी, बैड तो बहुत सारी हैं, दैट्स व्हाई ही इज डी ग्रेड, बट ही मस्ट हैव वन गुड क्वालिटी। तो वी थॉट हाँ गुड क्वालिटी है, एंड देन पुट दैट क्वालिटी इन देयर, वो लिख दी क्वालिटी, एंड देन दे सेड फॉर नेक्स्ट 6 months आई वांट यू टू ट्रीट योर डी ग्रेड स्टाफ मेंबर एज ए ग्रेड स्टाफ मेंबर, दैट मीन्स यू हैव टू ट्रीट देम एज ए ग्रेड, क्योंकि मेरे पास ए ग्रेड स्टाफ मेंबर आता है, वो मेरी तरफ बढ़ रहा होता है, आई फील रियली ग्रेटफुल, अरे आजा आजा, व्हाट डू यू वांट, लाइक यू नो व्हाट न्यू आइडियाज डू यू हैव, टेल मी न्यू आइडियाज, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। और वही डी ग्रेड पर्सन मेरे पास आ रहा है तो कहता है यार ये आ गया पकाएगा अभी, ही इज गोना कंप्लेन, दिमाग खा जाएगा, सो आई एम इन दैट मूड बिफोर ही केम, सो नाउ दे हैव टोल्ड अस टू चेंज दैट, सो नाउ आई स्टार्टेड ट्रीटिंग माय डी ग्रेड स्टाफ मेंबर एज ए ग्रेड स्टाफ मेंबर। लिटरली वो बंदा मेरे पास आ रहा है, I'll close my eyes, not close my eyes literally, in my head I was thinking, oh इसमें एक quality बहुत अच्छी है, I'm gonna focus on that quality, and I'm not joking, on that year the D grade staff member got the exceed expectation as their performance review। बंदा वही है, स्टाफ मेंबर सेम है, बॉस भी सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस उसका कैसे चेंज हुआ? Because I started looking at that person as an A grade person. You know, the people who have more than one kid, you know, sometimes आपके दिमाग में आता होगा ना, this kid is smarter than that kid, or this kid is more sporty than the other kid, आता है ना दिमाग में, compare होता है दोनों kids का। Trust me, the only difference that those kids have is because of हमारी mentality. They actually are not, they don't have issues. Kids don't have issues. We have. Like for example, if my son Narayan, if I keep telling Narayan, यार एक काम कर बेटा वो उठा दे, नहीं तेरे से नहीं होगा, तू मत उठा, I'll ask someone else. After sometimes he will realize कि यार ये छोटा सा काम मेरे से नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मैंने उसको ये दिया है। Us in relationship, we need to treat our partners, our kids, our colleagues, our friends, Bhakti Raksha people as A grade personalities. And as soon as we start treating them as A grade, what will happen? They will become A grade. I mean, don't take too much of a risk. I'm just saying, it works. It works. The essence is we should be grateful for what we have, and we should be grateful for all the relationship that we have. And we should cherish our relationship. So we have seen. So we are what topic are we doing? What is the name of the topic? One God. Very nice, very nice. One God or many gods. तो हम लोग अभी कहाँ पर थे? We have seen who is the incarnation. Who is Krishna incarnation of Vishnu or Vishnu incarnation of Krishna? Vishnu incarnation of Krishna. And Krishna is incarnation of Vishnu. How does that work? We'll see today. So, हम लोगों ने कल देखा था कि what is the difference between Krishna and Narayan? What was the difference between Krishna and Narayan? हम लोगों ने देखा था? Anybody remembers? Yes. Can you pass on the mic to? What is the difference between Krishna and Narayan, which was in that time? Krishna was like Krishna is at home and Narayan is at office. Very CEO nice. of the office. That is correct. That is correct. And then we discussed Vishnu is incarnation of Krishna and Krishna is incarnation of Vishnu. हम लोगों ने देखा था Krishna expands himself into Balram. Balram expands into 4. Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Anuruddha. Then out of that, Narayan form of it again transform into expands into VSPA. और उसके बाद VSPA expands into Mahavishnu, Mahavishnu expands into Garbhodakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu expands into Paramatma, and that Paramatma is in each and every particle of the material world. And demigods who are like Vayudev, Indradev, Chandradev, ये सारे जो देवी देवता हैं, they are part of the material world. They are not spiritual world. Now there is a next question is how is Vishnu incarnation of Krishna? So there are 3 kind of Vishnu. हमने इसमें देखा 3 kind of Vishnu कौन से हैं? महाविष्णु, ये जो लेटे हुए हैं
what's happening with Mahavishnu? Mahavishnu के pores में से universes are coming out. Then वो जो महाविष्णु है वो each and every universe में as गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में he goes inside, he expands himself into unlimited गर्भोदक्षाय विष्णु. He goes into each and every universe, and then in that universe he expands into Paramatma, which is क्षीरोदक्षाय विष्णु. So यहाँ पर विष्णु के तीन रूप हैं. इसको कहते हैं पुरुषावतार. What do we call it? Purusha-avatar. There are 3 Purusha-avatar, which is Karanodakshaya Vishnu, or we call him Mahavishnu. The second is Garbhodakshaya Vishnu, which is जिसके नाभि में से कमल निकल के आता है, and then Brahma is born on that. That's Garbhodakshaya Vishnu. And Kshirodakshaya Vishnu is Paramatma, which is in each of us, each of our hearts. And the same Garbhodakshaya Vishnu is in this plant. Same Garbhodakshaya Vishnu is the part of this steel. Kshirodakshaya Vishnu is part of this steel. Same Kshirodakshaya Vishnu is in this drum. Same Kshirodakshaya Vishnu is in this mic. Same Kshirodakshaya Vishnu is in every jiva and between 2 atoms and inside atoms and everywhere. So that's how Vishnu is an incarnation of Krishna. Then जो हम लोगों ने कारणोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु देखे थे, we actually discussed this already, है ना? वो causal ocean में रहते होते हैं. What happened? Something happened. What happened? I lost my screen. Charge है? नहीं, fully charged. Let me get out of it. I'll restart it. Okay, just give me 1 second. I mean, restart the program. Keynote. So, can anybody repeat for me what is? Tell me who is Mahavishnu. Karanodakshaya Vishnu. He lies in the great ocean, and then from his body pores essentially all the universes come. Universes are coming out. What we call him? Mahavishnu or Karanodakshaya Vishnu. Then who is Garbhodakshaya Vishnu? So Mahavishnu expands into each and every universe. That Mahavishnu expands into each and every universe, goes inside and lies down. And then he starts the creation of Brahma. Every universe has a Brahma. लेकिन हमारा जो ब्रह्मा है, हमारी यूनिवर्स का ब्रह्मा है, उनके कितने हेड है? 4 हेड. बट देयर आर, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल, हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत स्मॉल है. बड़े बड़े यूनिवर्सेस में जितना बड़ा यूनिवर्स होता है, ब्रह्मा के उतने ही सिर होते हैं. सो देयर आर यूनिवर्स है जिसमें ब्रह्मा के 1000 हेड है, कहीं पर मिलियन हेड है, ट्रिलियन हेड्स हैं. इतने बड़े बड़े भी वो हैं. हमारा जो यूनिवर्स है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिवर्स. And who is फिर उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन होता है? Can we get born into another universe? Yeah. We have. This is not the only universe we've been born into. We've been born into different universe. All that depends on कैसे कर्मा है हमारे. Whatever is necessary for us to grow in bhakti or grow as a person, whatever based on our past karma, that's the universe, that's the circumstances we get. But every universe is material or spiritual? Material. 100% material. Is there a spiritual aspect in this material world? Is there a spiritual aspect in this material world? Krishna comes as in all. What is the spiritual aspect in this material world? Because Vishnu expands himself into living and non-living. Yes, very nice. When Vishnu comes in living and non-living as a Paramatma, that's a spiritual. Now, when I'm talking about Krishna and Vishnu, you're listening to it. In this process, the whole process is spiritual. हम लोग कीर्तन कर रहे थे, the whole process is spiritual. Now, जब हम कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, when we are actually listening to the kirtan, for that moment we are not in the material world anymore.
We are actually in the spiritual world. This place becomes spiritualized. And that's why हम कहते हैं, when हम कीर्तन करते हैं यहाँ पर, the vibration stays in this area. Because of, क्या होता है? क्योंकि it becomes spiritualized. Now it's working now. Perfect. Let's go back to this slide. चलो हम लोग पढ़ रहे थे ना, when Krishna is like a father and the child but unique, spirit soul can be. ये हम लोगों ने कर लिया था कि नहीं करा था? Did we do it? नहीं. हाँ, we didn't done this. Krishna is like a CEO is Krishna, and when he is at home he's different, you know. And Krishna comes as different avatars, incarnation. We've seen this one. Why do Krishna have many incarnations? Because he's trying to persuade us to go back home, come back home. But then he tries everything. If something is happening to my laptop, I don't know what's going on. It came back, but I don't know why. Krishna's innumerable incarnations are never created nor destroyed. अब कोई बोलेगा कि somebody was asking me, I think, who was asking me this question? I think your daughter asked me that question. She asked me, Krishna created everyone, so who created Krishna? Good question. So, Krishna's numerous incarnations never created nor destroyed. This is a sentence. This is actually true. So, if he is never created, what does that mean? He was always there. Always there, yes. But what does that mean? He's basically time. Yeah, he is basically time. He is actually the time. भगवद गीता में कहते हैं कालोस्मी, I am time. मैं समय हूँ. मैं समय हूँ. So Krishna's innumerable incarnations are never created nor destroyed. They exist eternally beyond time. अब there was a science student, उसने मुझे बोला this is rubbish. Everything has to be created. How can something exist without creation? तो मैंने उसको सिंपल से एक बात पूछी. मैंने बोला look, he is a physics का, he is an engineer है ना. तो मैंने उसको पूछा, can you create energy? Can you create or destroy energy? You cannot create or destroy energy. Energy can only be transformed from one energy to another energy. यहाँ पर मैंने इसको रखा है, यहाँ पर है ना. This जो height है इसकी, ये height जितनी height है उतनी potential energy है इसमें. ठीक है, जब मैं इसको छोड़ दूंगा यही potential energy kinetic energy में convert हो जाती है. एंड जब नीचे आ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. तो एनर्जी चेंज नहीं हुई, एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इस चेंज हुई है बस. तो मैंने उसको बोला सिमिलरली कृष्णा और गॉड इज दैट एनर्जी व्हिच क्रिएट्स एवरीथिंग. इट कैन नॉट बी क्रिएटेड. एंड देन उसकी बत्ती जली ना यार, दिस इज ट्रू. एंड देन ही अंडरस्टूड कि यार हाँ, दिस इज इफ एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, देन Krishna is an energy. Like he is not energy. Like we can't call him a light. ना energy मतलब he is an energetic. तो मैंने उसको energy समझाया पहले. फिर मैंने उसको बोला every energy need to have a source, and that source of that energy is Krishna. ठीक है? Then what is Krishna's relationship with Vishnu, Shiva, millions of other gods, and me? Supreme God. So जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर. सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये रोड है सामने, है ना, ये रोड सॉरी बिन्स, ये जो बिन आपके घर में आता है, जो कचरा आप लोग बाहर फेंकते हो, बिन आती है लेने के लिए ना, तो वो बिन कौन, who takes away all the bins? Council. मैं कहूँ प्राइम मिनिस्टर takes it. Does प्राइम मिनिस्टर come and takes the bin? नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर takes the bin. Prime Minister doesn't take the bin, but Prime Minister has organized people, a council person who can come and collect the bin. लेकिन वो भी भले ही वो कॉन्ट्रैक्टर हो, whatever it is, it comes under council. Council comes under who?
गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना. तो इसी तरीके से द पर्सन दैट एवरीबॉडी, जहां पर जाके हायरार्की खत्म हो जाती है, दैट पर्सन इज कृष्णा, है ना. सो ये सारे के सारे जो गॉड्स, डेमी गॉड्स वगैरह हैं, ये कौन है? दीज आर ऑल, गायब हो गया ना. What's going on? Something is happening to my laptop. So what's happening is, so somehow Krishna is the head of the whole hierarchy. So for example, Lord Shiva. Who is Lord Shiva? Anybody know who Lord Shiva is? Who's Lord Shiva's father? I mean, ultimately yes, but do you know? In Purana, in Srimad Bhagavatam, it says Lord Shiva comes from the eyebrows, in between the eyebrows of Brahma. So what happened is, Brahma, when Krishna ने ब्रह्मा को बोला, create the progeny, like create the material world बनाओ, populate करो, it's your job. तो उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू. सो उन्होंने 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनाए, फिर उसके अंदर सारे जीवों को डालना था. तो जीव को बुलाने के लिए you need someone to procreate. तो उन्होंने क्या करा? The first kids that he created was Chatush Kumar. There are 4 boys, they were born, and as soon as they were born, उन्होंने बोला बेटा तुम लोगों को, सब लोगों को बड़े होके प्रोजनी करनी है, मतलब you have to procreate. तो उन्होंने बोला no, we want to be ब्रह्मचारी, हमें पता है everything is fake, we don't want to be in this material world, we want to go. तो उन्होंने क्या करा? वो निकल गए. ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बोले मैंने, भगवान ने मुझे सेवा दी है प्रोजनी क्रिएट करने के लिए, और ये लोग जो हैं, these guys are not listening to me. तो उन्होंने क्या करा? He got angry. As soon as he got angry, from his eyebrows, Lord Shiva appeared. But that Lord Shiva is the incarnation of Rudra, which we'll talk later. So when Shiva appeared, Brahma, he was son of Brahma. So उन्होंने बोला पिताजी, tell me what to do. Then he said, go and progenate. Okay. And because Lord Shiva is in charge of mode of ignorance, all उनकी जितनी भी प्रोजेनीज थी वो कैसे थे? They were all राक्षस, दानव और ये सारे थे, है ना, पिशाच और ये सारे. Now what happened is, when सब ये होने लग गया, तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे वो उनके सारे गण जो थे, उनके जो बच्चे थे शिव जी के, उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. Because that's what he's meant to be, because he's in charge of mode of ignorance. उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. ब्रह्मा ने बोला no, एक काम करो, तुम्हारी जब सेवा आएगी तो मैं बुलाऊंगा, you go and meditate on the Supreme Lord. Then Shiva took all his people and he went to Kailash and he started meditating. So technically he is son of Brahma, but we say Brahma, Vishnu, Mahesh. इंडिया में बोलते हैं ना तीनों एक ही बराबर हैं, बट एक बराबर कैसे होंगे? ब्रह्मा, शिवजी is Brahma's son, है ना, and Vishnu is direct incarnate, मतलब in the direct line of Krishna. So how can they be equal? This is in first canto. Between first canto में भी है और third canto में भी description है बहुत. And then what happened is, Lord Shiva actually, because Lord Shiva is the biggest Vaishnav. You know, आपको इंडिया में क्या होता है? South India में, you go to South India, some said, I am Shivite. You are Vaishnavs. I am better than you. अब जिसकी आप पूजा करते हो, who is Shiva, they call themselves Shivite. That person, that Shiva is the biggest, the most powerful Vaishnava naam Yatha Shambhu. The biggest, the most powerful Vaishnava in the universe is Shiva. So if Shiva is Vaishnav, then how are you not Vaishnav? है ना? हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं ना, वैष्णो देवी. You know what is the reason why it's called Vaishno Devi? It's nothing to do. Yeah, because Vaishnavs, because she is Vaishnav as well. What is the meaning of Vaishnav? Vaishnav is someone who prays to Vishnu. That's Vaishnav. अब लोगों ने क्या कर दिया? हम इंसानों ने क्या कर दिया? I am Shiva Bhakt.
So I'm different to you, Krishna Bhakt. You Krishna Bhakt, आपको सब कृष्णा कृष्णा दिखता है तो you go. But हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि शिवा is the biggest, the most astounding भक्ता of भगवान विष्णु is शिवा. And आप शिव पुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, सब जगह डिस्कशन है. पार्वती और शिव जी का जो डिस्कशन है उसमें सब में आपको पता चलेगा. जैसे अपने हनुमान जी है, हनुमान जी किसके वो हैं, किसके अंश हैं? शिव जी के अंश हैं. एंड दैट इज व्हाई हु इज ही सर्विंग? राम किसके अंश? राम कौन है? विष्णु, है ना. सो दैट इज द रीजन. कई लोग हमारे हिंदुओं में क्या होता है, हम लोगों को सबसे पहले तो कंपैरिजन आ जाता है. मेरा टीवी पुराना कब हुआ? जब पड़ोसी ने नया ले लिया. सिंपल. तो हमें क्या लगता है कि हमारा माय फेथ इज बेटर देन समवन एल्सेस फेथ. अगर मैं हनुमान जी को प्रे कर रहा हूं राइट नाउ, इज इट रॉन्ग? नो. व्हाई इज इट नॉट रॉन्ग? मैं तो बोल रहा हूँ कृष्णा को करना चाहिए. आप लोग कैसे बोल रहे नॉट रॉन्ग? टेल मी, गिव मी अ रीजन व्हाई प्रेइंग टू हनुमान जी इज नॉट रॉन्ग. हाँ, he is Vaishnava. He is the pure Vaishnava. He is a pure Vaishnava. And when you pray to pure Vaishnava will never give you anything which is non-Vaishnava. जैसे for example, you ask हनुमान जी please यार, मतलब मेरी ना नौकरी लगवा दो, मेरा ये करवा दो, मेरे सारे विघ्न हटा दो. हनुमान जी से आप मांगोगे सारी चीजें. हनुमान जी will never give you anything unless and until it will help you in your bhakti. If you can become, उनका दिमाग में क्या है, अगर मैं इसको राम भक्त बना दूंगा, that's all my aim is, that's all he thinks, है ना. लेकिन अगर आप जाओगे, मेरे को यार मारुति 800 है मेरे पास, मेरे को कौन सी गाड़ी, एस्टीम दिला दो, है ना. तो ये बोलेंगे यार ये एस्टीम से भगवान राम का क्या लेन देना, कोई नहीं लेन देना, तो निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, है ना. So we need to understand, there is nothing wrong with demigods. The problem is, if you are asking demigod something which is not gonna take you to spiritual path, then demigods have an obligation to give it to you. Not all demigods, I'm talking about like Lord Shiva. Lord Shiva, जैसे रावण था. Was Ravan a great guy? No, he was a demon. जब वो शिव जी की पूजा कर रहा था, when he was cutting all his head, उससे पहले every day or every week he used to misbehave with different women every day. Do you think Shiva would be happy with that? No. Then why Shiva actually came and gave him the boon and you are my bhakta, जीते रहो ये वो, and then he tried to make क्या बोलते हैं, he wanted to make a staircase all the way to स्वर्गलोक, है ना. So that stupidity was there, but Shiva still gave him the boon. You know why? Because he did that यज्ञ. उस समय जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ के यज्ञपति वैसे विष्णु होते हैं, लेकिन Shiva was taking the offering on behalf of Vishnu. So Shiva has to give him the result what he wants. अगर उसने सारे के सारे austerity करी है, he has to. लेकिन वो जो उसको boon मिला है, वो ultimately उसके लिए फायदेमंद था कि नहीं? कुछ फायदा नहीं था उसका. Because of that boon, Ravan got killed. क्योंकि अगर उसको बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बनाया होता, है ना, तो क्या होता है, रावण के पास इतनी औकात ही नहीं होती कि वो सीता को उठा के लेके जाता, है ना. फिर कुछ भी नहीं होता, मरता भी नहीं वो. लेकिन क्या हुआ, बिकॉज डेमीगॉड्स दो रीजन होते हैं. एक तो ऑब्वियसली उसको मारना भी था, और दूसरा डेमीगॉड्स आर ओब्लाइज्ड टू फुलफिल योर. उसका एग्जाम्पल क्या देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंद्र का यज्ञ करा तो इंद्र विल गिव यू बरसात, है ना. अगर आप इंद्र को बोलो मुझे कोई मतलब नहीं है विष्णु से, इंद्र को ही इज ओके विद दैट. लेकिन क्या होता है कि इंद्रा विल गिव यू वट एवर यू वांट. प्रॉब्लम उसमें यह है कि जो हम लोगों को मिल रहा है, इज इट गुड फॉर मी और नॉट, इट डजंट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यह है, इंडिया में, यहाँ पर तो नहीं, इंडिया में आप पान वाले के पास जाओ, छोटा सा बच्चा, इफ यू गो टू द पान वाला एंड से गिव मी 10 रुपए लेके जाओ, उसको बोलो मुझको सिगरेट चाहिए, पान वाला विल गिव यू सिगरेट. क्यों? क्योंकि पान वाले को किससे मतलब है? वो 10 रुपए जो आ रहा है, ठीक है, और कौन ले रहा है डजंट रियली मैटर, है ना, वो दे देगा. सो डेमीगॉड्स आर लाइक दैट. सो व्हेन वी प्रे टू डेमीगॉड्स, दे विल गिव यू
even a cigarette which is gonna ultimately kill us. इसीलिए demigod worship के लिए मना करा जाता है. और अगर if you want to pray to demigods, do it, but ask for bhakti. Don't ask for material things. Bhakti ultimately is always good. Everything else can have a problem. मेरे पास if I have $1 million a month की salary, it is quite possible that मेरी जो spiritual growth है वो ऐसी चली जाए. It is quite possible. ठीक है? तो when I'm asking Krishna give me $1 million a month, he will not give me $1 million a month until he is 100% convinced कि मेरी जो spiritual life है ऐसी नहीं जाएगी. ठीक है? Second thing है demigods can only give you what is in your karma. Krishna can give you even if there is not in your karma. Doesn't really matter आपने क्या कर्म करा है. If Krishna wants to change it, Krishna can change it. Demigods cannot change your karma. For example, मैंने वायु यज्ञ, इंद्र यज्ञ करवाया है ना, और मेरे को चाहिए, for example, मैंने बोला कि I'll continue this यज्ञ, बहुत अच्छे से कराया, उसका फल है $5 million. ठीक है, मेरे को मिल जाएंगे $5 million. तो लेकिन वो कैसे मिलेंगे? पूरी लाइफ में जो मैं $5 million कमाने वाला हूं मुझे एक साथ मिल जाएगा. ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा, अरे वाह यार, इंदिरा ने मेरे को $5 million दे दिया, मेरे पास तो था ही नहीं. आपका कर्मा था. अगर आपके पास कर्मा नहीं है, इंदिरा कैन नॉट गिव यू एनीथिंग विच इज नॉट इन योर कर्मा. नथिंग. आपको पता है, इवन नो डेमिगॉड्स, नो वन कैन गिव यू विच इज नॉट इन योर कर्मा. Shiva can't give you. No one can give you. The only person who can give you what you don't have in your karma is Lord Vishnu. And मैं नहीं कह रहा हूँ, it's written in all the scriptures. All the Vedesh sarve aham eva vedya. भगवान कहते हैं, what is that verse? Can you repeat after me? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च. वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदांत विद वेदांत कृत वेद वेदांत कृत वेद. वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम. वेदांत कृत मतलब वेद जो लिखा है वो भी मैंने लिखा है, वेदांत विद जो उसमें लिखा है वो भी मेरे बारे में लिखा है, और जो वो है वो भी मैं ही हूं. च अहम, चाहम का मतलब च अहम. सो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो. सबके हृदय में कौन बैठा है? मैं बैठा हूं. कैसे? एज ए परमात्मा. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च. हमारी नॉलेज, रिमेम्बरेंस, मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस ऑल कम्स फ्रॉम कृष्णा. अगर हम चाहें तो भगवान को भूल नहीं सकते हैं अंटिल भगवान चाहें कि हम उनको भूल जाएं. उनके बिना तो हम भगवान को भूल भी नहीं सकते. एंड देन वेदांत कृत वेद विद एव चाहम. भगवान कहते हैं मैं ही हूं सब कुछ. तो सारे वेदों में क्या लिखा है? द ओनली पर्सन हु कैन गिव यू विदाउट एनी कोटा इन योर कर्मा इज विष्णु तत्व, है ना. शिव जी, व्हाट शिव जी कैन डू इज, अब कोई बोलेगा नहीं यार ये तो आप गलत बोल रहे हो, शिव जी से हम मांग सकते हैं. यस, एक्चुअली शिव जी कैन डू इट एज वेल, बट शिव जी कैन ओनली डू इट इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ. शिव जी, अगर शिव जी को हमने पटा लिया, शिव जी विष्णु को पटा सकते हैं कि नहीं पटा सकते हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज दैट्स हिज बिगेस्ट भक्त, है ना. हनुमान जी इज द बिगेस्ट भक्त ऑफ राम, है ना, और शिव जी इज बिगेस्ट भक्त ऑफ विष्णु. उनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं, देयर इज नो वन. और दूसरी चीज क्या है? शिव जो है ना, शिव तत्व, शिव तत्व इज, जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी इज ए पर्सन लाइक मैं और आप. हम, इफ आई वांट टू बी ब्रह्मा, 100 लाइफ टाइम तक मेरे को 100% वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, एंड आई गेट एंटाइटल्ड टू बिकम अ ब्रह्मा. ब्रह्मा इज ए जीव तत्व हमारे जैसा, और हम लोग बन चुके हैं एक बार ब्रह्मा, गारंटेड. तभी हम लोग यहाँ पर हैं. अभी वी हैव ऑलरेडी डन ब्रह्मा का रोल एक बार. लेकिन और जो विष्णु है, जो ब्रह्मा क्या है? जीव तत्व है. लेकिन विष्णु क्या है? पूरी की तरह से भगवान तत्व है. जो शिवा है ना, ये बीच के हैं, शिव तत्व. देयर इज ए स्पेशल तत्व कॉल्ड शिव तत्व.
Shiva Tattva is not Jiva Tattva. We cannot compare Shiva to any demigods. For example, Varun है, Varun Dev है, Indra Dev है, Chandra Dev है. इन सबको हम लोग भगवान शिव से कंपेयर नहीं कर सकते. Because Shivji is not like these people who are Jiva Tattva. Shivji is actually a Shiv Tattva. उनको खुद का तत्व है शिवजी. कहते हैं that only difference between Shiva and Vishnu is दूध और दही वाला. दही, दूध से दही बनता है ना, दूध से दही बनता है, दूध विष्णु है और दही है शिवा. सो एक्चुअली उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, है तो दोनों एग्जैक्टली सेम चीज. द ओनली डिफरेंस इज दूध कैन एनी टाइम बिकम दही, बट दही कैन नेवर बिकम दूध बैक अगेन. इज इट ट्रू? एंड दैट इज द ओनली थिंग. शिवा कैन नेवर बी बिकम विष्णु. एक्चुअली ही डजंट वांट टू बिकम विष्णु, बट शिवा हैज 64 कलाएं जो होती हैं वो सिर्फ भगवान कृष्णा में है. बाकी शिव में थोड़ी सी कम है, उसके बाद ब्रह्मा जी में और भी कम है. ऐसे करके हम लोगों में आते आते बहुत कम रह जाती कलाएं. तो प्रभु जी जब विष्णु बोल रहे हैं यहाँ पे कृष्णा को, हाँ सेम, कृष्णा एंड विष्णु आई कंसीडर एज द सेम, बिकॉज विष्णु इज द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, नॉट डायरेक्ट एक्सपेंशन बट इनडायरेक्ट एक्सपेंशन. बट शिवा इज द एक्सपेंशन एज वेल अगर देखा जाए तो. सो वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध. सो जैसे जो शंकरशन है, शंकरशन किसके हैं वो है आपको पता है? हु इज शंकरशन? बलराम है ना. ही इज ए पार्शियल, बिकॉज एवरीवन इज ए इनकारनेशन ऑफ बलराम, एक्सपेंशन ऑफ बलराम. सबसे पहले बलराम आए थे, बलराम सब में एक्सपेंड हुए ना. सो ही इज ए एक्सपेंशन ऑफ बलराम. अब मैं अब आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू. व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस राइट नाउ? ये हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? वन गॉड और मेनी गॉड, है ना. सो हमारे हिंदुओं में क्या बोला जाता है? यहाँ तो भगवान की दुकान लगी हुई है, जो भगवान खरीदने हैं खरीद लो, है ना. बट इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. समबडी आस्क्ड मी कि यार तुम्हारे वन ऑफ द चर्च गाय, उसने मुझे बोला तुम्हारे हिंदू में तो बहुत सारे भगवान हैं. मैंने कहा नहीं है, बहुत सारे भगवान नहीं है, बहुत सारे डेमीगॉड्स हैं. अब डेमीगॉड्स वर्ड बहुत डेरोगेटरी लगता है. अब मेरे को क्या है, भगवान शिव के लिए डेमीगॉड वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता. हम देवी देवता, इसलिए देवी देवता इज ए बेटर वर्ड टू यूज. देवी देवता कौन होते हैं? उनके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, तो डेमीगॉड्स, मैंने उसको डेमीगॉड्स नहीं बोला, मैंने कहा दीज आर एम्पावर्ड सोल्स. दे आर एम्पावर्ड सोल्स. सो दीज एम्पावर्ड सोल्स आर चोजन बाय हु? किसने चूज करा इनको? भगवान ने चूज करा. तो अगर चूज करा तो स्पेशल होंगे कि नहीं होंगे? अगर हम लोगों ने, हम आप में से कौन, किसको लगता है कि इंद्र वाज नॉट ए वेरी गुड गाय? रेज योर हैंड. इंद्रा ने कितने काम करे आपको पता ना? वो जब उन्होंने गोवर्धन उठाया था तो इंद्रा ने उनपे पूरे उसको डुबाने की कोशिश करी थी. और क्या करा था इंद्रा ने? इंद्रा ने जब भगवान हाँ और दूसरे हाँ, और उसके बाद उसने क्या करा था कि भगवान कृष्णा सत्यभामा अपनी वाइफ के साथ वहां गए थे किसी काम से स्वर्गलोक में. मैं 5000 years की पहले की बात बता रहा हूँ. Then when he was coming back, सत्यभामा को ना वो there was a पारिजात फ्लावर बड़ा अच्छा लगा. उसने बोला मेरे को चाहिए. भगवान ने बोला ले लो. तो उसने पूरा, भगवान ने ट्री उठा के नीचे ले आया. इंद्रा को गुस्सा आ गया, मेरे यहाँ से ट्री कैसे लेके जा रहे हो? अरे उनको ये नहीं पता है भैया, यू आर ए सुप्रीम, ही ओन्स एवरीथिंग, ही ओन्स द होल यूनिवर्स. अगर वो अपने यूनिवर्स में से, जैसे अगर इफ आई ओन अ शॉप, ठीक है, इफ आई ओन अ शॉप, मैं अपनी शॉप के गले में से $100 निकाल लेता हूँ, इज इट ए चोरी? मेरे ही है, वो मेरा पैसा है. आई कैन टेक व्हाटएवर आई वांट व्हेनेवर आई वांट. लेकिन इंद्रा को गुस्सा आ गया, इंद्रा अटैक्ड हिम. कैन यू इमेजिन अटैकिंग कृष्णा डायरेक्टली? सो इंद्रा को देखा जाए तो इंद्रा सीम लाइक ए स्टूपिड पर्सन. लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस? ही इज ए किंग ऑफ. मेरा बेटा मुझसे पूछता है पापा ये कैसा किंग है? हाउ व्हाट काइंड ऑफ किंग इज दिस? ही इज सच एन इडियट. ही डजंट नो. ही वाज टेकिंग पंगा विद हनुमान जी. हनुमान जी से पंगे ले रहा था. कहता व्हाई इज ही, डजंट ही नो हु हनुमान जी इज? ही इज शिवा. मैंने कहा ही नोज. देन आई वाज टेलिंग हिम दैट Indra is in that position because Krishna has chosen him. So he cannot be a stupid guy. True? But then why is he doing stupidity? Because Krishna through his stupidity is telling us, even if you are a king of heaven, if you are stupid, you will get these results.
अगर आप किंग ऑफ हेवन भी होगे ना, फिर भी इफ यू डिसरेस्पेक्ट योर गुरु यू विल लूज ऑल योर ओपुलेंस. ये सब सिखाने के लिए इंदिरा ने बोला ठीक है आप मेरी इंसल्ट करा लो, अगर लोगों को सिखाना ना यू कैन इंसल्ट मी, डू व्हाटएवर. एक बार क्या हुआ भगवान शिव के साथ, व्हेन मोहिनी मूर्ति केम, है ना, लॉर्ड शिवा, जो पार्वती माँ है ना, पार्वती माँ इज वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द होल मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है. बट व्हेन कृष्णा केम, ऑब्वियसली कृष्णा इज वेरी अट्रैक्टिव. व्हेन ही इज इन अ मोहिनी मूर्ति फॉर्म, फीमेल फॉर्म, शी वाज सो अट्रैक्टिव. शिवा गॉट बिविल्डर्ड. शिवा ने पार्वती माँ को छोड़ा. ही स्टार्टेड रनिंग आफ्टर मोहिनी मूर्ति like a mad person, and all his disciples were there, all these demigods were there, and he was running and running and running. And then once Bhagwan showed his real form. Usually क्या होता है, अगर हमारे साथ ऐसा होता है, हम we will get embarrassed. यार ऐसे क्यों करते हो यार, don't do this. हम लोग ये बोलेंगे ना यार ऐसे कैसे यार, this is wrong ना, आप मेरे सबके सामने इंसल्ट करा रहे हो. You know what Shiva did? Shiva just bowed down. He just fell flat in front of Vishnu Bhagwan and said, thank you very much for using me to teach everyone that even if you are as renounced as Shiva, Krishna can still bewilder you. And you have used me in your service. I am very grateful. आपको ऐसी सर्विस जब भी चाहिए मुझे बोलना. He was not embarrassed. You know why? Because he got defeated by who? Mohini Murti, which is form of the Lord. So this is the beauty of Shiva. Shiva is not an ordinary person. He's a Vaishnava naam Yatha Shambhu. कई बार हम लोग बैठते हैं, कई लोग सोचते हैं ISKCON वाले है ना, they are against Lord Shiva, है ना. There are classes on Lord Shiva that we hear from the temple. हनुमान प्रभु की क्लास है. If I find it, I will send it to you. You listen to this class and you'll know what Shiva is. The person, no matter who he is, if someone insults Shiva, he will never be able to satisfy Krishna. Never. Because imagine, somebody, I'm sitting here, ठीक है ना? If someone insults my son, no matter who that person is, would I be happy? I won't be. Krishna, if someone is insulting Shiva, he is not going to be happy. है ना? And हम लोगों को पता चलना चाहिए शिवा कौन है. Shiva is not an ordinary person. Without, अरे आप देखो ना क्षेत्रपाल, he is called क्षेत्रपाल. आप वृंदावन के बाहर शिव जी का वो लगा हुआ है. You cannot enter वृंदावन without taking permission from Shiva. सेम विद साउथ में काफी सारे टेम्पल्स हैं, उसमें सामने हर टेम्पल के सामने एक मंदिर है. डिफरेंट फॉर्म ऑफ शिवा इज देयर. यू कैन नॉट एंटर दोस टेम्पल विदाउट टेकिंग दर्शन, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ लॉर्ड शिवा. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज इमेजिन दिस इज व्हाट राम के लिए जो हनुमान है वही भगवान कृष्णा के लिए शिव है. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी डोंट ऑफेंड लॉर्ड शिवा. We are in love with Krishna, whatever it is. But Hanuman ji, if I have I am a devotee of Hanuman. Like I always, like since I was little, I carry a small Hanuman Chalisa in my pocket. I still have it in my bag. Choti si Hanuman Chalisa. And I know Hanuman Chalisa, Hanuman Ashtak, and you name it. Everything to do with Hanuman ji I know. The reason is, because of that Hanuman ji, I am sitting here right now. And I told this before as well in the class. Because of Bhagwan Hanuman ji की कृपा के I can do the bhakti. Because he is the best bhakt. So he can bless us with the bhakti. So it's not a problem when you are praying to anyone. It's not a problem. Problem is what you are asking for from them. So अगर कोई आपसे पूछेगा कि हिंदुओं में is it one God or many God? What will you say? One God. We are not polytheistic. We are monotheistic. Islam is monotheistic. Christianity is monotheistic. And Hinduism, Sanatan Dharma is monotheistic only.
लेकिन क्या है कि जिन लोगों को कम पता होता है, they will actually create all of these divides. And कहते हैं ना कि have you heard of this? अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए. Have you heard of that? What does that mean? Anybody knows? These kids are looking at me as like, what is this? Anyway, yes, Madhaji. Can I mic please? So if the pot is the pot is half filled, then it starts spilling out. Yes. And if it is fully filled, and if you walk with that, you can walk smoothly. The people who are always defensive, they're like half filled. Half knowledge. Half knowledge क्या करती है? When you are half knowledge, then you talk a lot. You know, होता है जब when you start भक्ति, थोड़ी सी knowledge आ जाती है, then we start spilling that everywhere. इसको भी सुना दिया, अरे लेदर की घड़ी पहन रखी है, ये क्या कर रहे हो? What are you doing? Then we start preaching everyone, like, you know, because आधी knowledge है. When that knowledge becomes bigger and bigger and bigger, then you accept people for who they are. Then you accept it. If I'm accepting someone, that doesn't mean I'm going to become like them. I'm accepting someone, it's okay. इसमें भी कृष्णा का बाप, इसमें भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है ना? रावण के अंदर भी वही परमात्मा थे जो हनुमान जी के अंदर है, सेम है ना? So when we look at people with that angle, हमारा mentality change हो जाएगा. इसीलिए we are not polytheistic, we are monotheistic. और हमारे जो demigods हैं, they're like मंत्री है ना? They're like caretakers of this material universe, but they're all material. The only spiritual part in the whole thing is Lord Shiva and Vishnu. This is the only spiritual part. Everything else is all material. ठीक? Yes. What about Balram? Sorry. What about Balram and like a VSPA? No. When I say I was talking about demigods, VSPA and Balram, and they are all expansions of Krishna. So they are actually Krishna. I'm talking about material world. In this material world, all the demigods like Arun, Varun, ये जितने भी है ना, Vayudev और ये, you know, they are all demigods and they are all material. They have material body like us, and they die as well. So Indra will die as well, and Brahma will die as well. One day Brahma will die as well, but the Shiva will never die because Shiva is not material. Shiva's body is not material body. And Vishnu will never die because that's not material. All the Devi Devtas, they will die after some time, and the new people will take charge of it. Whoever likes rains, they might. आप लोगों में से जिसको बारिश बहुत पसंद है, you can apply for that Indra's position if you want. You know, it is possible. Anything is possible. However, what do we want to achieve? We don't want to achieve Swarg. We want to achieve what? We want to achieve the love of God. Okay? I think we'll stop here. Anybody has any questions, any comment? Yes, you might. So, Prabhuji, material Jeev Tattva and spiritual bodies, right? So, Shiva is expansion of Rudra, which is expansion of Krishna indirectly. So, when we come back to the topic of souls, so we have this. Okay, so Paramatma is one, and then we are all individual souls, right? So the expansions of Krishna, are they independent souls or are they not? The expansions of Krishna. Okay, good question. The expansions of, actually no one is independent. Like us, we are हम लोग बोलते हैं ना, we are independent. We are not independent. We are 100% dependent on Krishna. Similarly, and we are expansions of Krishna as well, by the way. All of us, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना. ममे वांश, मेरे अंश हो तुम. और कब से हो? सनातन से, इटर्निटी से, है ना? और लेकिन आपको क्यों नहीं पता चल रहा है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. Because of these 5 senses and the mind, which is a 6th sense, you don't know who I am. You've forgotten it. But you are my ansha. So, yes, those expansions of Krishna are 100% dependent on Krishna because they carry
and at the same time independent because they carry the potency of Krishna. We are fully dependent on Krishna, but we still have one independence. कोई बता सकता है क्या independence है हमारे पास? Yes. नहीं. Huh? Free will. Yes, free will. Now man works on that free will. You know, so we have a free will, and that free will, जितनी हमारे पास free will है, उतना हम independent है. Krishna will never take us back home, back to Godhead without our endeavor or without our हमारी इच्छा. अगर हमारी इच्छा नहीं जाने की है, he will never take us back. He is that kind of a father. He'd say, okay, if you don't want to come, don't come. But the problem is, the more independent we think we are, उतने independent भी नहीं हम लोग. Sorry, so Prabhuji, by independent, they are actually. Oh, you mean whether they are separate or they are same? They are not separate. They are actually same. Okay. They are so same. I mean, to make it simple, right? So we say that in our body we have Atma, which is a separate. हाँ पता नहीं क्यों क्या होगा. So we say that we have separate Atma, which is our individuality, or it's a separate, it's a drop of the ocean, right? And then we have Paramatma, right? When Krishna comes, he does not have Atma, he's himself, right? Yeah. So when we talk about Shiva, for example, does he have an Atma in him, or he's whole? He's spiritual. No, he doesn't. He's not Atma. जैसे भगवान के पास ऐसा नहीं है. भगवान अलग है, उनकी आत्मा अलग है. Bhagwan is Atma. Similarly, Shiva is an expansion. You know? Shiva Tattva is right at the cusp of material and spiritual world. So Shiva can deal with spiritual and material world at the same time. That's how his amazing potency is. You know? But all these expansions, they are actually same Tattva. Yeah. You know? Same Tattva. Anyone else? Any questions? Yes, Mike, please. Yeah, I just wanted to say about the video that you showed at the start. Yes. He said about two utensils being in the sink. But I think if we are having a relationship, don't we have a relationship with Krishna as well? Yes, we do. But that can never have noise because that can never have no noise. That is true. But if you think about Radha and Krishna, they always have noise. They fight with each other like anything. You know, even Yashodamma gets upset with Krishna. So that is another relationship. Depending on what our relationship is with Krishna, हमारा जो रूप है गोलोक वृंदावन में, हमारा अगर वात्सल्य रूप है, for example, if my original position in Golok Vrindavan is a father figure of Krishna, then I can have a tussle with Krishna. If I have a relationship of a friend, then I will fight with him, like, you know, I can throw stones at him, I can push him, I can punch him, I can, you know, उनसे लड़ाई कर सकता हूँ. But if I have a position of just a servant, like a grass is there to serve, or the cows, then I will never do that. Then I will never have. So the utensils वाली बात है, it's only relevant in this material world because भगवान कृष्णा के साथ हमारा लड़ाई कभी नहीं होगी रियल वाली. बस वो लड़ाई होगी जिसमें रस है. जो राधा कृष्ण से लड़ती है उसमें रस है. When कृष्णा के फ्रेंड्स कृष्णा को मारते हैं उसमें उनको रस मिलता है. कृष्णा को भी रस मिलता है, उनको भी रस मिलता है. लेकिन जब हम घर में लड़ाई करते हैं किसी को रस नहीं मिलता. कुछ और ही मिलता है ना. So for that we have to understand that is a little bit different. ठीक है ना? Yes. When I was reading some kids story books about Krishna, then I was feeling that most of the stories about anger, fight, punishment, killing. Why is that so? I didn't like it. Krishna की book में? Krishna की book में. हाँ, very good, very good question, and it is very important. There is no talk about forgiveness in that, love in that. It's all about he did that, I'll kill them. He did that, I'll punish them. Which book are you reading? Krishna's book. I'll show you. I'll bring it someday.
Okay, so because देखो Krishna is an epitome of forgiveness. There is a verse in Shrimad Bhagavatam, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंघा सयापा यदत प्रसादवी. बकी बकासुर की बहन क्या नाम था उसका? पूतना. पूतना केम अहो बकी यम स्तन कालकूटम. कालकूट नाम का जहर. कालकूट जहर ऐसा होता है, इसको सूंघ भी लो ना, यू विल डाई इंस्टेंटली. कालकूट जहर लगा के आई थी अपने ब्रेस्ट पे, एंड शी वांटेड टू किल कृष्णा, बट कृष्णा सक्ड हर ब्लड and he killed her, and because she was feeding him like a mother, he gave her a position of a dhatri. What do you call that? Dhatri in English? Nurse, mother nurse. He gave her this is the. But her intention was not right. Doesn't matter. Krishna, the intention. This is the mercy of Krishna. So this is what he was showing. He said, doesn't even matter आपकी intention क्या है. Krishna still has good intention for you. Even if we have bad intention for Krishna, Krishna has good intention. So when Krishna kills, अभी हम लोग पढ़ेंगे next class में. When Krishna, अभी दुर्योधन, how many of you know that दुर्योधन को when Krishna, अभी हम भागवत में बात करते हैं. I don't know how many of you were there. कृष्णा ने बोला था उनको कि भाई इसको ना मारो, जांघ पे मारो एंड मर जाएगा ये, है ना. तो जब भीम ने उसकी ये थाई तोड़ दी हड्डी एंड ही वाज डाइंग, कृष्णा वाज रियली सैड, एंड इट इज रिटन, इफ यू लुक एट द स्क्रिप्चर, ही वाज रियली सैड बिकॉज ही डजंट वांट एनीवन टू गो थ्रू पेन. Even if he's like Duryodhan who wanted to kill his devotees or his, even then he was sad for Krishna's death. When Ravan died, Ravan kidnapped Sita. फिर भी when Ravan died, Vibhishan ने बोला I'm not gonna do his last ride. Ram ने बोला क्यों? He's your brother. I know he had some bad qualities, but he's your brother and he is a human being. So you need to go and give his last ride. I will organize it for you. So there is a lot of forgiveness. I don't know कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो, but there are books that उसमें भी बहुत सारे demons को मारा है उन्होंने. But every demon that Krishna kills went back home, back to Godhead. That was his mercy. Yes. But does it make sense, Richard? Yeah. अभी आप जैसे बता रहे थे कि डेमीगॉड से जब भी आप प्रे करते हो तो भक्ति मांगनी चाहिए फॉर विष्णु. नहीं, आप कुछ भी मांगो, बट एक चीज उसमें ऐड कर दो. Whatever you're giving me, let me not deviate from my path of bhakti. You can give me everything. Give me $1 million a month. That's okay as long as I don't deviate. पर ऐसा नहीं होता कि whenever we are worshipping, हम वर्शिप किसी की भी करें, बट हम वर्शिप विष्णु तत्व की ही करते हैं. बिल्कुल सही बोला आपने. भगवद गीता में there is a verse in Bhagavad Gita which says that. Yes, you're right. So how will it मैटर कि मेरे सामने क्या है जब मैं वर्शिप उस तत्व की ही कर रही हूँ. एक्चुअली क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत डीप है. मैं आपको एक छोटा सा उसका वो देता हूँ. देयर इज अ वर्स इन भगवद गीता, यान्ति देवव्रता देवाम पितृम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मध्या समथिंग मध्या जिनोपिमा, है ना. ये वर्स बताता है, इसके पर्पट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आपको यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से सिटी जाना है तो किस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ? कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट नहीं, ईस्ट. आई विल ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट. अब कोई बोलेगा कि ऑल द वेज लीड टू गॉड. नो, ऑल द वेज डोंट लीड टू गॉड. भगवान बताते हैं इफ यू वांट टू गो ईस्ट, इफ यू गो वेस्ट, व्हाट इज हैपनिंग? यू आर गोइंग अवे. सो when you are asking demigods का जो position है, in that position they are obliged to give you things. अगर आपके पास कर्मा है और आपने उनको प्रसन्न करा है, they are obliged. ऐसा नहीं है कि वो चाहे देंगे, नहीं चाहे तो नहीं देंगे. नहीं, उनके पास रूल बुक है. भाई जैसे हमने काउंसिल में, if I paid extra money in council, टैक्स में 80 will return it back to me. They are obliged to do it क्योंकि वो मेरा है ना. तो when you do some sacrifice, you do something and a demigod is happy, they are obliged to give you something in return. Now what they are
even because you're praying to them, they're obliged to give you and they will use your karma to give it to you. You are not praying to the Vishnu Tattva, you are praying to demigods. Krishna Bhagavad Gita में कहते हैं कि anything that you pray to, ultimately it's come to me only because जिससे आप pray कर रहे हो ना, those people like demigods, they are actually devotees of Bhagwan as well, है ना? So ultimately, लेकिन क्या है? When we ask for wrong things, they will have no option. They will have to give it to you, even if it's bad for you. But if you are asking for a demigod, but you are asking about your spiritual life, then nothing bad can happen to you, because now you're no longer dealing with your karma. Karma जो होता है, it's only material. When you're talking about going back home to Godhead, talking about bhakti, this is all spiritual. When it comes to material, they have to give you what is in your karma and what you deserve right now. They have to give, they are obliged. But when you're asking about bhakti to them, then they will give it to you, because bhakti is different realm. So yes, अल्टीमेटली जो देवी देवता हैं उनके पास शक्ति भगवान से आ रही है. अगर वो आपको कुछ दे रहे हैं, वो भी भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, अच्छा दे दो इनको, है ना? क्योंकि अगर सैंक्शन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको. लेकिन जब वो सैंक्शन करते हैं, ही इज नॉट हैप्पी. मैंने $1 मिलियन मांग लिया महीने का, ही मे नॉट बी हैप्पी कि यार ये बर्बाद हो जाएगा, इसकी भक्ति खत्म हो जाएगी, इसको नहीं देना है. लेकिन मैंने ओब्लेशन दी है, उनको वो कर दिया, मेरे कर्म में भी है. भगवान करेंगे अच्छा दो, विल फाइंड सम अदर वे टू ब्रिंग हिम बैक, अभी तो दो इसको. ही विल सैंक्शन इट, बट ही विल कृष्णा विल, अगर हम कृष्णा से मांगेंगे, ही विल नेवर गिव यू व्हाट विल बी अल्टीमेटली नॉट बेनिफिशियल फॉर यू स्पिरिचुअल लाइफ में, है ना? और ये बात समझ जाए ना हम लोग, द डे वी कैन अंडरस्टैंड दिस ना, तो हमारा जो भगवान के प्रति वो जो रिलेशनशिप है ना, यार ये क्या कर रहे हो भगवान, क्या फंसा दिया मेरे को, ये ऐसे बॉस दिया है, ऐसी बीवी दी है, ऐसे बच्चे दे दिए है, ऐसा हस्बैंड दे दिया, ये सब नहीं होगा हमारी लाइफ में. वी विल स्टार्ट लुकिंग एट एवरीथिंग इन आवर लाइफ. भगवान ने ऐसे ऐसे लोगों को हमारे आजू बाजू में खड़ा करा है, दैट विल ब्रिंग अस बैक टू हिम समहाउ. इवन इफ दैट पर्सन इज saying rubbish to us, even that person is yelling at us, someone is swearing at us, even that person is placed there to bring us, make us humble, make us develop our character, so that we can ultimately move one step towards God, you know. So yes, आपने भगवद गीता में पढ़ा है, there is a verse, I'll send you the verse, it's a beautiful verse. भगवान बोलते हैं कि आप अगर डेमिगॉड की पूजा करते हो, अल्टीमेटली मेरी ही कर रहे हो, है ना? लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो. उसमें भी लिखा है भजताम अब अविधि पूर्वकम. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अविधि पूर्वक. जो डेमिगॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो मेरे को वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं. वो जो अविधि पूर्वक है, उसको हम विधि पूर्वक कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी आस्क फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट रादर देन मटेरियल ब्लेसिंग्स. आई हैव वन मोर क्वेश्चन. लाइक अभी तक हम जितने भी कोई जैसे बुद्धा है, महावीर है, या इवन बिफोर दैट, लाइक जितने भी इनलाइटेंड या जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जिनकी हुई है, दे हैव मोस्टली बीन किंग्स एंड वेल्दी पीपल. किंग्स एंड वेल्दी पीपल. सो व्हाई डू वी से कि richness is not going to make you spiritual? Isn't it कि जब आप बहुत कुछ देख लेते हो, like you have everything, you realize that there is nothing in it. Exactly. उसके beyond आपको तभी दिख सकता है when you have seen that. तो why don't we get? No, I'm not saying that. I'm saying कि why not ask for it so that yes. Like, okay, very good question. So for example, there is Jim Carrey says, I want each and every person in this world to be very rich, very famous, so that they know that being rich and being famous is not going to give you happiness. तभी जाके पता चलेगा, है ना? So the problem here is when you become, it's like that. It's like, for example, if I want to be brave, ठीक है? If I want to be brave, I can go and fight border पे,
and I'm going to be brave. I'm going to develop that bravery. There is another way I can develop bravery is take a knife and start cutting myself, in front of the hospital and tell people I'm brave. So which one is bravery actually? Bravery is when you are actually doing the act of bravery vidhi purvak, which is correct for you. Otherwise, आपने बिल्कुल सही बोला. Once we all get famous, once we all get wealthy, there is a possibility that we realize, oh my goodness, इसमें तो कुछ है ही नहीं. Let's go back to bhakti. But क्या होता है? On the way, it is such a dangerous tread. The path from here to the wealth and fame is so dangerous. There is more chances for us to fall back. So Krishna knows our capacity. He goes, बेटा तुमसे नहीं होएगा. क्या था डायलॉग था ना? आपसे नहीं होगा. कैसे क्या था? तुमसे ना हो पाए. तुमसे ना हो पाए, है ना? So भगवान को पता ही है. And you're right. अगर हम वहाँ पहुँच गए तो it is possible that we will get there. But वहाँ तक पहुँचने के लिए the things that we're gonna lose, the things we're gonna miss out. अगर हमसे निकल पाए तो निकल पाए, नहीं निकल पाए. There is a story. शिला प्रभुपाद के disciples थे. उन्होंने बोला we're gonna go to this place जहाँ पर wrong places, जहाँ पर गलत काम होते हैं. We will go to those places and preach, give them Bhagavad Gita. शिला प्रभुपाद बोला मत जाओ. उन्होंने बोला क्यों? बोले but शिला प्रभुपाद this will test our character, क्योंकि हम लोग ब्रह्मचारीज हैं. This will test our character. शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं जाओ, बिकॉज तुम्हारी टेस्टिंग में अगर तुम गिर गए तो तुम्हारे ये जो तुम करोगे ना अभी, फिर अगेन मिलियन बर्थ तक तुम्हें वही करना पड़ेगा. मैं चाहता हूं डोंट डू इट. देन अनदर सेट ऑफ पर्सन डिड द सेम थिंग, आस्क्ड द सेम थिंग. शिला प्रभुपाद गो लाइक ए लायन एंड दे वेंट देयर एंड प्रीच्ड. ऐसा क्यों? बिकॉज शिला प्रभुपाद कुड सी दीस पीपल वर वीक. सो द रीजन व्हाई वी डोंट गेट दैट वेल्थ, दैट फेम इज बिकॉज वी आर वीक. If we have that caliber, we will get it, and then we will say no, I'm going to go back. So in order for us to be that, we need to have that strength. Oh, strength bhi kahan se aayegi? That strength will come through chanting. That strength will come through reading scriptures every day. That strength will come when we love each other, when we love people regardless of who they are, regardless of their good qualities, regardless of their good looks. We love people for who they are. Not, I'm going to change them, then I love them. And that's when you become closer to Krishna. Make sense? Okay. Prabhuji, also I think in Bhagavad Gita, Purport, Prabhupada has mentioned... people won't hear. Piche. I think in Bhagavad Gita, Prabhupada has mentioned in his purports that if you are advancing in your spiritual journey, then in your next life, Krishna will make sure you born in a wealthy and spiritual family, so that it's easier for you to continue to your spiritual journey. That's correct. Krishna says in Bhagavad Gita, and Srila Prabhupada mentioned in the purport, अगर आपने इस जन्म में भक्ति करने की कोशिश करी बट आप गिर गए, आपने अधूरी छोड़ दी, नेक्स्ट जन्म में you will start from where you left. है ना? You will get born in a family which is wealthy, so that you don't have to worry about anything else. पेट भरने की प्रॉब्लम में नहीं रहोगे. Then you have रोटी कपड़ा मकान. Then you seek the next thing, which is spirituality. Okay, cool. Anyone else? 9 o'clock. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.